Right, right. So the correct name is, okay. So the correct name is 5-amino 4-hydroxy methyl 2 nitro. Right. So this is the correct name. 5-amino 4-hydroxy methyl 2 nitro benzaaldehyde. ठीक है? चलो. Now the next is, which of the following compound show geometrical isomerism? So out of these four options, you have to select which of the following compound will show geometrical isomerism. ठीक है? Any guesses? कोई भी बताना चाहेगा reply इसका? Anyone? Which of the following compound will show geometrical isomerism? Right. For geometrical isomerism, we have some, condition that which will show geometrical isomerism. We have a restricted rotation, like C double bond C we have, and we have must do different group on both the carbon. So, can you tell me the correct one out of this four option? Which one is the correct? That which of the following will show a geometrical isomerism, GI? देखो, let me discuss this thing. For example, we have 4-methyl pent 2-ene, right? So we have a 4-methyl pent 2-ene. So how will you draw the 4-methyl pent 2-ene, right? So we'll draw the structure like we have H here, CH3 here, H here. Now again we have C, we have CH3, we have CH3, we have, and 1 2 3, yeah, we have one H here. Okay, so this is the structure of 4-methyl pent 2-ene. How we can say that? That is, we have 1 2 3 4 5, right? 1 2 3 4 and 5. So 4 we have a methyl group. So we have a 4-methyl pent, and 2 we have ene. So 4-methyl pent 2-ene. So here we can say that here we have a one different group here. यहाँ भी अलग group है, यहाँ भी एक different group है, यहाँ भी एक different group है. So we have four different groups on each two carbon atoms. So we can say that this will show geometrical isomerism. Now, this form is cis or trans. Can anyone tell me? This is a trans form or cis form? Anyone? This is a trans form or cis form? Can anyone tell me the correct cis or trans? Now, let me draw another orientation of this. Like C we have, and here we have H, and here we have CH3, here we have H, and here we have the same molecule like CH, CH3, and again CH3. ठीक है? So CH, CH3, CH3, C double bond C, CH3H. Right. So can anyone tell me which one is the trans configuration and which one is the cis configuration? In this question, they're only asking about the which will show the geometrical isomerism. So this is fine. 4-methyl pent 2 will show a geometrical isomerism. This is not the problem. But I'm asking out of these two, which one is the cis and which one is the trans? Because you know all these things. कि कौन cis है कौन trans है. So always remember beta, whenever the two similar groups are on one side, then they are said to be cis. For example, here we have a two hydrogen on the same side, two alkyl group on the same side. So we can say that this is a cis configuration, right? So this name is cis 4-methyl pent 2-ene. And here we have two atom which are in opposite to each other, right? Two hydrogen atom जो एक दूसरे का opposite है. So this is called trans. Okay, so this is called trans. So we have a two that is a cis and trans, right? So cis 4-methyl pent 2-ene and trans 4-methyl pent 2-ene. So this is what we have, right? Chalo. Move to the next question. That is the increasing order of boiling point, right? The increasing order of boiling point of the following compound, right? So you have to
identify the increasing order of the boiling point, right? Increasing. So we have phenol as a common, and a different groups are attached. For example, in the first case, we have attached with toluene, CH3. CH3 group is attached. In second case, NO2 group is attached. In the third case, NH2 group, and the fourth case, OCH3, right? That is anisole. So out of these, you have to identify कि भाई किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होने वाला है, ठीक है? सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर इज the first one shows hydrogen bonding from OH group only, right? So this will show hydrogen bonding from OH group only. So this will show hydrogen bonding, hydrogen bonding, ठीक है? From OH ग्रुप ओनली, बिकॉज OH ग्रुप है यहाँ पे, तो ये OH ग्रुप ओनली के चलते एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहा है, राइट? इन सेकेंड केस OH ग्रुप तो यहाँ पे भी है, so they will also show hydrogen bonding, है ना? So shows the strongest hydrogen bonding, right, from both the side of OH group as well as the NO2 group, because we know ना hydrogen bonding is made up with FON, these three elements, phone, कि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ से भी शो कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ से भी शो कर रहा है। So we can say that this will show hydrogen bonding with both the strongest hydrogen bonding as compared to the first one, because with NO2 as well as OH2. So this will the strongest hydrogen bonding. So ये strongest hydrogen bonding show कर रहा है. Now move to the third one. So show the stronger hydrogen bonding from both OH group as well as the NH2 group, right? So yeah, पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो दो चीज के चलते हैं, OH के चलते भी है और NH2 के चलते भी है. Now in the next one, this they also show the stronger hydrogen bonding due to O. नाउ इतना तो क्लियर हो गया कि सबसे कम किसका होगा, बिकॉज सबसे कम होगा फर्स्ट वाले का. व्हाई? बिकॉज दिस दे विल शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओनली ड्यू टू दिस OH ग्रुप. रेस्ट ऑल आर शो डबल डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फॉर एग्जांपल एज OH, एज NO2 as well, for example NH2 as well, and OCH3 as well. So minimum is for 1, right? So minimum किसके लिए होने वाला है? 1. So out of this, option B and option D is eliminated. So only we left with the two options, either A and B. Right. Now, let's see maximum which will show NO2, NH2 or OCH3. Right. So always remember, beta, always remember this thing. That is the maximum, right? Maximum strength of hydrogen bonding is shown by NO2, right? That is NO2. Then comes NH2, then comes OCH3. So the correct order is C. Which one is the correct order? C. That is minimum for 1, then comes uh yeah, then comes fourth, then comes third, and then comes second. How will you recognize this? Because we know this F, O and N. ये तीनों को याद रखो, ठीक है? So we know this fluorine, oxygen, nitrogen. So fluorine belong to 17th group. Oxygen belong to 16th group, nitrogen belong to 15th group. So जैसे जैसे as we move from left to right in the periodic table, electron activity is increase, and the hydrogen bonding formation is also increased. So मजबूत hydrogen bonding किसके साथ होगा? फ्लोरीन के साथ, then ऑक्सीजन के साथ, then नाइट्रोजन के साथ. सो हेयर यहाँ हमारे केस में ऑक्सीजन कहाँ है? ये रहा. तो क्या हो जाएगा? ये रहा ऑक्सीजन. फिर क्या हो जाएगा हमारे पास? NH2, फिर हो गया NO2. तो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो द करेक्ट ऑर्डर इज दिस वन, सी. चलो, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. फटाफट जल्दी से सभी लोग लिखेंगे IUPAC नेम. द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. सभी लोग, आई एम वेटिंग फॉर अ रिप्लाई. फटाफट सभी लोग ट्राई करेंगे. फटाफट. द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज.
ट्राई कर रहा है कोई? चलो, प्रेफरेंस किसको देने वाले हो? फटाफट। प्रेफरेंस किसको देने वाले हो? नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? फ्रॉम विच यू स्टार्ट द नंबरिंग? फंक्शनल ग्रुप में प्रायोरिटी किसको देने वाले हो? फटाफट। चलो देखो, सो फ्रॉम हेयर विल स्टार्ट योर नंबरिंग, दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, राइट? सो यहाँ पे क्या है हमारे पास? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है। सो हमारे पास है अभी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो नंबरिंग ये हो गई वन। ठीक है। सो दिस इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये हो गया, नंबरिंग वन से स्टार्ट कर लो। देन वी हैव टू, थ्री, फोर एंड फाइव। अब करो नेमिंग फटाफट। वन टू थ्री फोर फाइव नेमिंग कर दिया, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी, ऑप्शन डी। कोई सी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है? चलो पहले देखते हैं। ए बी सी डी ऑर्डर तो यहाँ भी मेंटेन करना है। सो जो डी बोल रहा है फाइव पे ब्रोमो, तो ब्रोमो तो फोर पे है, तो फाइव ब्रोमो कैसे होगा? तो डी तो होगा नहीं ना। फोर पे ब्रोमो है, साफ साफ दिख रहा है, तो ऑब्वियसली सी इज करेक्ट। हाँ, सी करेक्ट होगा। राइट, दैट इज फोर ब्रोमो, फोर ब्रोमो टू मिथाइल। सो वी हैव फोर ब्रोमो टू मिथाइल साइक्लो पेंटेन, राइट? फोर ब्रोमो टू मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, करेक्ट बेटा, राइट? सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज फोर ब्रोमो टू मिथाइल साइक्लोपेंटेन। और ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे प्रीवियस ईयर ही है, जीओसी चैप्टर से, ठीक है? तो जीओसी चैप्टर से ही सारे आए हुए हैं। तो देखो कितने सही सही क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो जस्ट ट्राई टू सॉल्व सच क्वेश्चन, राइट? The more you practice this such first type of question, easily you can solve, right? So the correct option is C. That is the 4-bromo 2-methyl cyclopentane carboxylic acid. Right. चलो, the next one is, which one of the following compound possesses the most acidic hydrogen? So out of this four option, you have to identify in which of the following they will possess more acidic hydrogen. ठीक है? You have to identify which one of the following compound possesses the most acidic hydrogen. ठीक है? Most acidic hydrogen आप लोगों को identify करना है इसमें से। Any guesses? कोई रिप्लाई, कोई बताना चाहेगा विथ प्रॉपर रीजन कि ये क्यों है? ए बी सी डी। एसिडिक हाइड्रोजन, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ? जो इजिली H प्लस डोनेट कर दे, राइट? विच कैन डोनेट H प्लस वेरी इजिली, दैट इज कॉल्ड मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, राइट? सो आउट ऑफ दीज यू हैव टू सेलेक्ट विच वन इज द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। बताओ, जिसमें H प्लस का निकलना बहुत इजी हो, आसानी से H प्लस निकलता हो। ठीक है, मैं ड्रॉ करता हूँ एक डायग्राम, ध्यान से देखना। Me, Me for methyl group, ठीक है? रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज मिथाइल ऑक्साइड, हाँ? कार्बन, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन। अगेन वी हैव कार्बन, हियर वी हैव हाइड्रोजन, हियर अगेन वी हैव कार्बन, डबल बॉन्ड, O M E, राइट? नाउ कार्बन, डबल बॉन्ड, वी हैव ऑक्सीजन, O M, ठीक है?
सो ये हो गया हम लोग का एमईओ, सी डबल बॉन्ड ओ, सी एच सी ओ, ओ एम ई, ओ एम ई। ठीक है। अब मुझे बताओ फटाफट, विच हाइड्रोजन, राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड possess द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन? सो दिस वन, दिस हाइड्रोजन इज द मोस्ट एसिडिक one, most acidic hydrogen. Why? Why this is most acidic hydrogen? Yeah, option correct is D. But why? Why this one is the most acidic hydrogen? Can anyone tell me why this hydrogen is the most acidic hydrogen? Because here we have a three donating R group. Here we have one R group. From here we have one R group. From here we have one R group. So due to the presence of three donating group, three R group, right? Three R groups are present here. So due to presence of these three R group, यहाँ पे donating nature है, this H plus can easily remove, right? So this is the most acidic hydrogen, right? So ये हम लोग का सबसे ज्यादा acidic hydrogen होने वाला है, most acidic hydrogen. That is option D. सबको समझ आया क्या? फटाफट कंफर्म करो एक बार. Everyone got it? Or any kind of doubt you can ask फटाफट. चलो, I hope everyone get it. चलो. Now, glycerol is separated in soap industries by. So, out of these four methods, fractional distillation, distillation under the reduced pressure, right? And the differential extraction and steam distillation. You have to tell glycerol. Glycerol क्या होता है? This is the structure of glycerol. That is OH, CH2, CH2, NOH. So, this is the structure of glycerol. So, you have to tell glycerol is separated in a soap industries by which method? Fractional distillation, distillation under the reduced pressure. So ये टॉपिक आप लोगों ने कवर किया होगा जब आप सेपरेशन वाला पार्ट पढ़ रहे होगे, डिफरेंट डिफरेंट कि किस तरीके से कंपाउंड को हम सेपरेट करते हैं, राइट? सो रिमेंबर बेटा, ग्लिसरॉल इज सेपरेटेड इन द सोप इंडस्ट्रीज by the distillation under reduced pressure, right? By the distillation under the reduced pressure. So remember this point, they are separated under the reduced pressure. Now, this is going to be a very interesting question. That is, consider the reaction sequence given below. Hmm? And which of the following is true? So out of this, you have to identify, consider the following sequence. Which of the following is true, right? कि कौन सा इसमें से true है, कौन सा इसमें से true नहीं. Okay. So here we have tertiary butyl and react with some base. H2 is removed and this will form alcohol. So rate is given as rate constant multiplied by tertiary butyl bromide. Tertiary butyl bromide. In this case, the rate is given as tertiary butyl bromide as well as OH. As well as OH. So which of the following is true? Changing the concentration of base will affect which will affect no effect on reaction 1. Changing the concentration of base will have no effect on reaction 2. Changing the base from OH to OR will have no effect on reaction 2. Or doubling the concentration of base will double the rate of both the reaction. So it is very simple way. It's not such a complicated question. It's look like it's complicated, but actually it's a very simple question. बहुत आसान question. देखो, in the first step, or we say in the first equation, we get rate is equal to K into tertiary butyl bromide. So rate of reaction depends only on the tertiary butyl bromide. There is no dependency of rate of reaction on the base. So how base will affect? So obviously, reaction 1 is independent of the concentration of OH negative, where in reaction 2, this is depend on the OH, right? In this, OH is dependent. Rate is dependent on the concentration of OH. So we can say that changing the concentration of base will have no effect on reaction 1. And this is absolutely true.
बिकॉज चेंजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ बेस, अगर आप कंसेंट्रेशन बेस का चेंज कर रहे हो, सो दे विल हैव नो इफेक्ट ऑन द रिएक्शन वन। को रिएक्शन वन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। वाई, क्यों नहीं पड़ेगा? बिकॉज इन रिएक्शन वन वी डू नॉट हैव concentration of base, right? So the correct statement is option A, right? That is, the changing the concentration of base will have no effect on reaction. Then chalo, again we have a one IUPAC naming question. So this question is coming in a regular, regularly every year. Such type of questions, one question is coming. So it's a very important. Now the correct IUPAC name of the following compound. सभी लोग ट्राई करो फटाफट. What is the correct? Because already we did 2 to 3 questions on IUPAC naming. So I hope everyone got it. So अब इसका आंसर कर सकते हो. So the IUPAC name of the following compound is, क्या होगा IUPAC name following compound का? The IUPAC name for the following compound क्या होगा? चलो, कोई नहीं बताना, किसी को नहीं बताना. चलो, सबसे पहले बेटा नंबरिंग स्टार्ट करो. दैट इज, किधर से नंबरिंग स्टार्ट करने वाले हो? हम्म, यहाँ से. दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we have a 6. So it means we have hex 3 पे इन है, तो hex 3 इन ओइक एसिड. क्लियर है? सो hex 3 enoic acid, ये तो क्लियर है. नाउ नेम द सब्स्टिट्यूट. So 2 we have methyl group, and 5 also we have 5. Better we name as 5 and 6, right? 5 and 6. This one is much better. 5 and 6. Hmm? So in 5 we have methyl group, and 6 we have aldehyde group, right? Aldehyde group, as we name as oxo. Hmm. So out of this oxo and methyl, obviously methyl alphabetically named first, so we can name as 2 comma 5, because in 2 and 5 we have methyl. So 2 comma 5 dimethyl. 2 comma 5 dimethyl 6 oxo, and this is hex 3 enoic acid. So 2,5 dimethyl 6 oxo hex 3 enoic acid. Yes, option D. So option D बिल्कुल ही correct है इसके लिए. So option D is absolutely correct. Move to the next question. ये question 2020 में भी आया हुआ है. Which of the following has the shortest CCl bond? Right. So out of the following you have to identify which of the following has the shortest CCl bond. ठीक है? Shortest CCl bond. Here we have a carbon chloride bond. Here also we have a carbon chloride, carbon chloride, carbon chloride. सबको बताना है सबसे छोटा कार्बन क्लोराइड बॉन्ड किसमें होगा. फटाफट. Which of the following has the shortest CCl bond? किसमें होने वाला है सबसे छोटा shortest CCl bond out of this four option? First, देखो, I'll explain. Due to due to strong due to a strong minus R effect, याद रखना. ड्यू टू ए स्ट्रॉन्ग माइनस आर इफेक्ट. माइनस आर इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होने के चलते NO2 ग्रुप एंड मेटा इफेक्ट ऑफ क्लोरीन पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन सी एंड Cl. सी और Cl के बीच क्या आ जाएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बिकॉज हियर वी हैव वन विथड्रॉइंग ग्रुप.
because all other we have a donating group. Donating group. Only in this case only we have a withdrawing group. So due to minus R effect or minus M effect, we can say that here double bond character is introduced. That is Cl. This is CH, double bond CH, and this is we have N, O, and O. So this is much more electronegative. So due to this, a double bond character is introduced, right? Due to this, a double bond character is introduced between CCl, and we know this thing: C single bond, CC double bond, CC triple bond. So single bond is longer, triple bond is shorter. So due to the double bond character, they have a shortest bond length. So which option is correct? That is option number B. ऑप्शन बी पायल चौहान बिल्कुल सही बेटा. ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है. सो दिस इज ऑल. हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए. इन कल की क्लास में भी हम लोग जीओसी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है. सो और कुछ क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग कल सॉल्व करने वाले हैं. सो ध्यान से एक बार रिवाइज करके आओ पूरे इस चैप्टर को. इन नेक्स्ट क्लास ऑल्सो इन टुमारो क्लास वी आर गोइंग टू सॉल्व सम मोर न्यूमेरिकल्स. राइट. सो टिल जस्ट रिवाइज ऑल दिस. और अच्छे से रिवाइज करो इसको और जितना कर सकते हो. कल कुछ और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर के और भी इंपॉर्टेंट, उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं. राइट. सो थैंक यू ऑल फॉर टुडे. कल मिलते हैं और वी आर गोइंग टू स्टार्ट सॉल्विंग सम मोर क्वेश्चंस. ठीक है.